ऑल राइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी खातून से जो कि पाकिस्तान आई हैं ख़ास तौर पे इस वजह से कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो वो उसको फैसिलिटेट करेंगी। किस तरह से आप क्या किसी से मिल सकती हैं, आपको क्या अगर आपका आइडिया अच्छा है तो फंडिंग मिल सकती है। पिक माई ब्रेन की बेसिकली ये फाउंडर हैं, CEO हैं और ये काम कर रही हैं 5 से 6 साल से एंड हर नेम इज़ मैक्सीन Cunningham. Hello Maxine, welcome to the show. Thank you so much. How are you? Wonderful. I just heard that you can say salam. Salam. Salam alaikum. Ooh, that's nice. That's nice. That's amazing. So Maxine, you have this organization, this company which is called Pick My Brain. Yes. What is it about? Pick My Brain is really a global knowledge marketplace where you can go and browse and book and have conversations with people from all around the world one-on-one. Okay. Yeah. Is it like a virtual space where you can go online and do it? Correct. Yeah. Okay. So you can meet people from all around the world and you just book a session and you can have a conversation. Oh. People from different countries, different backgrounds, different industries, different ages, different cultures. Amazing. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देती हूँ कि बेसिकली जो हम बात कर रहे थे ताहा के साथ भी यहाँ पे कि देखिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपको कनेक्ट करने के लिए सही तरीका पता होना चाहिए। सो पिक माई ब्रेन एक ऐसी जिसको कहना चाहिए प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो लाइक माइंडेड हो, सेम बिजनेस के आइडियाज़ आपको दे सकें, आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकें। एंड आई सॉ समवेयर दैट यू दिस द term is knowledge economy. This Yes. is the term you use, right? Yes. So help me understand that we go to this page and we just connect to like anyone, or are there any subcategories that this is the field I want to, like connect with? Yeah, you can browse by categories: business, art, politics, entertainment, artists, entrepreneurs, CEOs, engineers, lawyers, wide variety. The most diverse marketplace. Oh, you can search by country. Okay. So you can browse based on location, you can search by service, age, gender, and really dial in who you might want to talk with and have a conversation with. This is brilliant. So is there a forum, is there like an open forum where everybody's chatting with everybody, or is it like a one-on-one kind of conversation? It's one-on-one. So you can book people one-on-one, but when you sign up to Pick My Brain and you join the community as a brain or as a user, once a month we invite all of the users to have a giant global knowledge share. So we have one tonight at midnight. And brilliant. Anybody can join. Anybody can join, and just hundreds of people join on Zoom, and we mix and match you into different breakout rooms to have conversations with strangers from all around the world. This is brilliant. This is brilliant. I went to Switzerland to attend this YGL, Young Global Leader, and I just, like you said, Taha, I'll just speak in Urdu a bit so that people can understand that Taha, when I went there, I was like, अच्छा सही है, पाकिस्तानी शायद इतने talented नहीं होते या हमारे पास वो ideas नहीं हैं, and then I discovered that all right, we also can think of those things that other people are thinking, right? But the thing that is lacking in us is probably that confidence, the boost. Nobody was here to give us that boost. Like अब तो खुद चल के जो आ गए हमारे शो में. So मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और दुनिया से किस तरह से कनेक्ट किया जाए इस बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मैक्सिन ने भी अभी कहा कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आर्ट्स हैं, बिजनेस, साइंस, व्हाटएवर. सो लोगों से आप कनेक्ट कर सकती हैं. पिक माई ब्रेन. So Maxine, there are some categories which you'll really appreciate if people work in that. Feminism was one of them, eco-friendly system. So tell us something about it. Yeah, so one of the quotes I love to say is that 80% of the jobs that are going to exist by 2028, don't exist today. So we're seeing this like future of work transition into new jobs, new creations, where people are combining their experience and their passions into one and making new jobs for themselves. Interesting. So we're watching these fields open, and as we know, environmental is one job that is becoming more and more prevalent. Yeah. More women are coming on board and joining the workforce. We're just watching a bunch of people create different opportunities on the platform. So it's really a space to kind of get inspired, connect globally, expand your perspective. Like you said, gain confidence, understand ideas from different parts of the world, bring them back to your country, and innovate. Amazing. So I wanted to ask you something. Pakistan is still a developing country and not many people, come here. It's not very often. Yeah. So what made you come here? Was it Taha? Was it understanding of the country? What was it?
Yeah, so like I say, I'm Pick My Brain. Everything starts with a conversation. And so Taha and I met in Austin when I was pitching Pick My Brain on a stage. And Taha came up and said, listen, I really love your vision and your mission. I'm all about global knowledge sharing. I'm all about sharing your ideas. We should sit down and have a conversation. We should go for dinner. And I said, sure. So we went for dinner. That dinner turned into a 6-hour engagement. That 6-hour engagement turned into multiple engagements. And we just kept exchanging ideas and visions and missions. And it was over the series of that conversations where he was like, you know what? We should bring this into Pakistan, you know, the 5th largest country in the world, a country that, doesn't have maybe the representation or the global access that other countries have. Yeah. Big youth population, so much potential, but not a lot of global access. Exactly. And I thought, you know, that is such a good opportunity. And when do you get a chance to get invited into a country so personally? Yeah. So yeah, Taha's brought me in, and really again, like through one conversation, I'm now here in Pakistan, expanding our operations in Pakistan. We're hiring. लंबी लाइन लगी हुई थी इनकी जब इन्होंने जो स्पीच दी थी ना, तो आगे पीछे सब लोग बैठे खड़े हुए थे जब इन्होंने पिच की, तो 500 बंदों के सामने अपना आइडिया शेयर किया था। इन पाकिस्तान? नहीं, यूएस के अंदर। अच्छा, ओके, सही है। तो मैं भी लाइन में खड़ा हो गया, मैंने कहा इनको तो मैं पाकिस्तान लेके ही आऊंगा, इनका आइडिया बड़ा जबरदस्त है। तो मैं आधे घंटे के लिए मैं वेट करता रहा सही। फिर मैंने इनको जाके बोला, मैंने कहा देखें मैं आधा घंटा आपके लिए वेट कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ, आप डिनर पे आए प्लीज। और फिर इसके बाद मैंने उनको सेम डे फिर मैंने उनको दावत दी पाकिस्तान की। So this is what we were talking about, collaboration. Yes. And we always say whether it's like you dream about anything, it would be possible if you think it's possible, right? Yes. So we always say dream big. So Taha, when you wanted to, you know, have a conversation with her, a lot of people, a lot of expats and a lot of Pakistanis, when they talk to somebody who does not belong to the culture that we are in, they think that probably it's not going to work out, right? So you gave your best by giving her information about Pakistan, economy, stats. Was it like this? देखिए, आई थिंक बिलीफ तो यही होती है कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी जो विजन है कि वो ओपनली लोगों को एजुकेट करें, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, मेंटरशिप लें, हमारी भी वही विजन है। ठीक है। तो मैं रियली दिल से चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूथ है हमारी, वो प्लेटफॉर्म पे आए, राइट, और वो दूसरे लोगों से बात करें, तालीम लें, ओपनली शेयर करें। तो इनका भी जो विजन है ग्लोबल लेवल पे, वो मेरा भी विजन है। तो जब विजन सेम होती है, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी सूबे के, पंजाबी हो, सिंधी हो, साई मुंजा हो, जो भी हो, काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि एट द एंड द विजन आपकी सेम होनी चाहिए, तो काम में फिर बरकत आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं कि मैक्सिन के जो पिक माई ब्रेन है, ये आप इंस्टाग्राम पे जाके पिक माई ब्रेन, इसमें कोई बीच में गैप नहीं है, इसको एक्सप्लोर करें, इसको सर्च करें, किस तरह से आप जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं लोगों के साथ। और जब आप इसके थ्रू जाएंगे मैक्सिन की अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, सो यू विल गेट टू नो दैट शी इज काइंड ऑफ इन लव विद पाकिस्तानी फूड, इफ आई माइट से, एक्चुअली ट्राइड पाकिस्तानी फूड, being really daring. So we wanted her to try some not halwa puri, this is puri, okay, and this is aloo. Okay. So if you can give it a try, you would be really happy. Okay. So this and this? Not this pickle, because pickle is not something spicy. that I made. It's spicy, it's like really tangy, but the potato curry and just some puri. Just scoop? Yeah, just Any way you want. Any way you want. Any way Alright, you I'm want. just Just gonna don't do have this. this red chili. Don't eat the red chili? Yeah. It's too hot? Yeah, chili is too hot, but the rest of it, please Okay, have okay, it okay, and okay. let us know. And we अभी will इन्होंने पानी पूरी भी खाई थी। Oh, pani puri! So good. So good, but spicy, not spicy, really spicy. Medium spicy. I really like the spicy. I feel like it's like makes your tongue go on this giant adventure when you eat Pakistani food. Yeah, Yeah. it does. Actually, it does. Well, I'm so glad you tried it. So you know, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैक्सिन ने अभी हमारा खाना ट्राई किया, ज़िंदगी में कभी नहीं किया, चाहे खाना हो, चाहे बिजनेस हो, कोई आइडिया हो, जब आप सोचते हैं ना कि आप कुछ और नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप ग्रो होते हैं। सो तहा, जाने से पहले अगर कोई मैसेज आप देना चाहें कोलैबोरेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे जो मेन चीज़ है कि अपने आप को आप बैक करें, राइट, और दूसरी चीज़ साथ मिलके काम करें, और अपने आप के अंदर एक अपने आप को कभी गिराएं नहीं। ये ना समझे कि मैं किसी से कम हूँ या कोई मुझसे ज़्यादा ऊपर है। ये हमारे यूथ के अंदर एक कमी है।
और यू नो मेहनत करो, खुद आपको चीज़ें आपकी तरफ आएगी, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा तगड़ा रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं, हर छोटी चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो सोल्यूशन फाइंडर बने हम लोग, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखें। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझ में और किसी और में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है। सो हमें ये एहसास करना है कि कर सकता है, कोई भी कर सकता है। राइट। हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को बैक करना है, कोई और नहीं करेगा। ना बीवी, ना बच्चे, ना भाई, ना बहन, हमें खुद अपने सुबह जाग के अपने आप को बैक करना है। Absolutely, absolutely. Maxine, what would you like to say about taking ownership of your life and you know having this drive to do something and making the most of Pick My Brain? What would you like to say to the audience? Yeah, I think I'd go back to what you said, like what you can dream up, you can create. And so I just had this vision, like what if I could have a conversation with anybody in the world? What would that unlock for me? What would that allow me to live life like? What would that open doors to me for? Where could I travel? And that vision just got stronger and stronger. And so I just started to piece together and build it. And if you have that really strong vision and that mission, and you just walk towards it, it starts to create itself. And then all these doors start to open up to you, and the universe starts to collude and help you support that vision and mission, and then it just gets stronger and stronger. And people like Taha enter your life, and then you're in Pakistan, and then you're traveling the world, and all of a sudden you have a global knowledge marketplace, and you've helped shift the economy over into this knowledge economy and given people access to knowledge and connections, which is like the one thing that really holds us all back from having the opportunity to create and design our life. Absolutely, yeah. Absolutely, beautifully said. Thank you so much. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. And Maxine, we really want to do a show with you where we want you to experience a lot of Pakistani food and we'll see how you like it. All right. Well, जाने से पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए जिस तरह से Maxine ने भी कहा कि जो भी आप सोचते हैं, पहला काम है ड्रीम बिग, दूसरा काम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको ज़िंदगी में पॉसिबल कैसे बनाया जाए, स्टेप लिया जाए, लोगों से मिला जाए. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, नहीं होगा ना काम, इट्स ओके, कुछ और हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक योर ड्रीम्स कम इनटू रियलिटी. यू हैव टू डू इट. जैसे कि ताहा ने भी कहा, कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आप कर सकते हैं. ब्रेक पे जाने का टाइम है. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी जो आपकी मदद करेंगी अगर आप आईटी की फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आईटी के बारे में पढ़ाई की जाए. अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतज़ार कर रही है आपका, छोटी सी ब्रेक के बाद.